Good morning, everyone. Welcome to our Team CASA channel. So, in the continuation of so many webinars being organized by Sumit sir, today we are here with the kick-off webinar on IND-AS. So, ये जो webinar है IND-AS का, ये एक series में होगा and fortnightly होगा and we will have renowned speakers with us who will share their knowledge with you on IND-AS. So, today's webinar is on IND-AS. Today's webinar is on ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन गैप टू IND-AS. सो आज हमारे साथ रेनाउंड स्पीकर है निशा जी हैं, हमारे साथ आलोक कुमार गर्ग सर हैं एंड चांदनी गुप्ता जी हैं. तीनों रेनाउंड स्पीकर्स हैं एंड आलोक सर इज ऑथर एज वेल ऑफ IND-AS बुक्स एंड इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है सर को. देन एंड निशा जी एंड चांदनी जी तो पहले भी वेबिनार दे चुकी हैं इस प्लेटफॉर्म पे. आई थिंक निशा जी इज न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बट आपको तीनों ही आपके साथ ऐसी नॉलेज शेयर करने वाले हैं आज के वेबिनार में जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी. आई वुड रिक्वेस्ट सुमित सर टू just start give the starting remarks on today's webinar so that we can start with it. Thank you, Prinka ji, and good morning to everyone. Once again, welcome to each one of you on this IND-AS study group seminar, kick-off webinar on IND-AS. And my good friend and one of the best speaker, CA Alok Garg ji, a very known reputation having in the IND-AS. So welcome to you, Alok bhai, on this first webinar. As Prinka ji stated that we will organize fortnightly webinar on the series wise. So today's topic is I-GAAP conversion of Indian accounting standards to IND-AS. How we are going to convert our financial statement in IND-AS format, what are the challenges and conversion, how it will take place. So these are the various issues, how we will adopt the new IND-AS format. So various challenge will be discussed by the Alok Garg and another expert, CA Nisha Suyal Agarwal ji. Welcome to you, Nisha ji. Nisha ji also given 2-3 webinars on this forum. So welcome to you, Nisha. And Chandni ji. Chandni ji also expert on IND-AS. Welcome to Chandni ji on this platform. And today we will try to cover these various challenges in adoption, implementation, and phase-wise how it will be converted financial statement from traditional to the IND-AS form. So Alok bhai will start the deliberation, and the first topic we have decided IND-AS, I-GAAP to IND-AS. So various challenges and will be highlighted. So before I request Alok Garg ji to say opening remarks and various. Over to you, Alok bhai, for your deliberation. So thank you, Sumit bhai, for this opportunity. And it is always a matter of pride and pleasure to speak on this forum. And good morning, all of you, and good morning, Nisha ji, Chandni, and Priyanka ji. So as you have mentioned, this is a kickoff webinar by IND-AS study group. So of course, this is a very good initiative on IND-AS. And as far as this is a kickoff webinar, so we need to understand what is IND-AS, so how it is different from I-GAAP, so what is the roadmap for implementation. So the learned speaker Nisha ji and Chandni will deliberate more on the roadmap for implementation, impact of IND-AS on Indian financial statement. So I'll take another 15-20 minutes just to give you a summarized overview on this IFRS and IND-AS. So as of if I talk about Indian reporting system and Indian accounting system, so there are two set of standard which is prevalent into India. So one is accounting standard and another one is Indian accounting standard. So the name is although Indian accounting standard, but our accounting standard are also Indian accounting standard, which is drafted by Accounting Standard Board of ICAI and which is notified by Ministry of Corporate Affairs of India. So this accounting standard ASB was formulated in 1977, and after that the agenda of preparation of accounting standard was started. And the last accounting standard which was notified was Accounting Standard 29, which was notified in 2003. After that, no any new accounting standard was notified. Only there was an amendment in AS 11 somewhere in between 2010 and 11,
in terms of para 46A. After that, on 30th March 2016, 7 standard got revised, which is AS2, AS4, AS10, AS13, AS14, AS21, and AS29. And AS10 was largely amended in terms of getting it aligned with IND-AS 16, which is on property, plant and equipment. AS6 was deleted. So this was the overall development in terms of accounting standard era. But if I talk about Indian accounting standard, again, Indian accounting standard is again notified by Ministry of Corporate Affairs. Of course, it is drafted and formulated by Accounting Standard Board of ICAI. Then it is approved by NACAS, which is National Advisory Committee on Accounting Standard. So now it has taken a shape of NFRA. So then after it is notified by Ministry of Corporate Affairs and it become law of the land since 16 February 2015. So as of now, we have two set of standard, AS and IND-AS. Both are notified by Ministry of Corporate Affairs under Section 133 of Companies Act 2013. So AS is covered under Companies AS Rules 2006. IND-AS is covered under Companies IND-AS Rules 2015. Now the question comes into mind, why IND-AS? So what is IND-AS? So IND-AS is Indian Accounting Standards, which is nothing. It's an Indianized version of IFRS applicable to India. So it's a IFRS which is only applicable to Indian territory, so not other than Indian territory, and it's a Indianized version of IFRS which is only applicable to Indian companies in terms of Indian reporting system. So why now the things come, why IFRS? So let me tell you, this IFRS becomes a very, very prominent gap in the entire world. So if I talk about the relevance of IFRS, so half of the world is using IFRS in terms of GDP. So the total GDP of the world is around $100 trillion. So out of $100 trillion, around $50 trillion GDP is using IFRS. So half of the world is using IFRS in terms of GDP. If I talk about territory wise or jurisdiction wise, 70% of the world is using IFRS in terms of jurisdiction. So around more than 140 jurisdictions are using IFRS as of now. I have not used the word that they have adopted IFRS. I have used the word they are using IFRS. So because there is a difference between use of IFRS and adoption of IFRS. Okay. So 70% of the jurisdiction is using IFRS. And if I talk about the IFRS standard, the abbreviation is International Financial Reporting Standard. So no any name of the country has been used as a prefix, like Indian GAAP, US GAAP, UK GAAP, Malaysian Financial Reporting Standard, Hong Kong Financial Reporting Standard, Singapore Financial Reporting Standard, Indian Accounting Standard. So if you focus on this word IFRS, International Financial Reporting Standard, so the focus is on the entire world. The focus is not on a particular territory or a particular continent or a particular particular country. Okay, so it is international, it is global. So these are the unbiased standard, these are the non-territory specific standard, and any country who want to use the IFRS can use the IFRS. So this is the prevalence and importance of IFRS, which how I should see it. So the best part is, if somebody is using IFRS, there are two mode of using IFRS. One is adoption and one is convergence. Adoption means as simple as taking others' baby as your baby, as simple as that. So it means 100% application, like Europe. So Europe has adopted IFRS in 2005 and they have used IFRS as it is. So if you see the European financial statement, they write the word as under basis of preparation part, they write that the financial statement of a company, let's say I will take the example of HSBC. The financial statement of HSBC Bank PLC has been prepared under International Financial Reporting Standard, which is issued by International Accounting Standard Board and as adopted by European Financial Reporting Advisory Group and European Union. So they mention that we are preparing our financial statement as per IFRS, and this is the IFRS for which parent is IASB, who is sitting in London, and we are the guardian. We are the guardian for European territory. Okay, so we have adopted IFRS, and the origin is from IASB. The only part what we have done, we have adopted. Okay. The second one is convergence. Convergence means you are taking IFRS and you are doing some modification in those IFRS standard, like India has done convergence. Okay, so India has done some changes. Hong Kong has done some convergence. So Hong Kong has done some changes, and that is why they call it as a HKFRS. Okay, Singapore has done some changes. That is why they have called it as a SGFRS. Malaysia has done some changes. That is why they call it as a MFRS, Malaysian Financial Reporting Standard.
Middle East has not done any changes. They have adopted IFRS. So that is why they call it as a IFRS. Okay. If you see the annual report of Emirates, so they say that this financial statement have been prepared as per IFRS. Okay. But if you will see the balance sheet of Infosys, they will not say that the financial statement have been prepared as per IFRS for Indian reporting. For NASDAQ reporting, they are preparing as per IFRS, but for Indian reporting, they are preparing as per IND-AS. Okay. So again, India has adopted the convergence route for this IFRS for getting it applicable into Indian territory. So convergence means modification, doing some changes, and these changes have done in three kind. So one is carve out, we call it as a carve out. The second one is carve in, and the third one is removal of option, or let's say curtailment of option. So whatever you can call. So this is something where we have removed or we have curtailed some option which is given under IFRS. So I'll take it one by one. Carve out means the treatment which is given under IFRS, we have deviated from the treatment and we have applied a new treatment. For example, under IND-AS 103, there is a standard called as a business combination. If I compare this particular standard with our old accounting standard, so it is comparable with accounting standard 14, which is accounting for amalgamation. So under IND-AS 103, if a company, so first of all, I'll talk about IFRS 3. So IFRS 3 is on business combination. Under IFRS 3, if a company is acquired another company, okay, and the company has acquired another company for a purchase consideration of 100 rupees, and the value of the net assets which is acquired by a company is 120 rupees. So consideration 100 रुपए का है और net assets की value 120 रुपए है. It means 20 rupees capital reserve. There is a gain of 20 rupees. We are paying less and getting more. Okay. So this 20 rupees has been treated as a gain on bargain purchase, which has to be routed through P&L under IFRS 3. Okay. But we have evaluated that this is not a normal transaction. This is a transaction which is happening in the non-ordinary course of the business. Because आपका बिजनेस ये नहीं हो सकता कि मैं हर बार कंपनी खरीदता बेचता हूँ और उससे मुझे गेन होता है और उससे मैं अपना धंधा चलाऊंगा, अपना बिजनेस चलाऊंगा. So this is a non-ordinary in nature. This is kind of a capital in nature. So that is why we have not agreed with the treatment which is given under IFRS 3, and we have adopted a different treatment which is similar to AS 14. हमने बोला कि हम इसको कैपिटल रिजर्व कहेंगे and it has to go to reserves. So it will not route it through P&L, it has to go to reserves directly. So this is not a distributable in nature. Okay. So this was the carve out which we have taken in IND-AS 103. Let's take an example of carve-in. So if I talk about carve-in, means we have put in some additional guidance. Again, under IFRS 3, there was no specific guidance for accounting of common control transaction. Now, what is meant by common control transaction? I'll take an example. For example, there is a parent company A. This parent company has two subsidiaries, B and C. This B has one more subsidiary D and C has a subsidiary E. Okay. So A is having two subsidiary, direct subsidiary B and C. D and E are the indirect subsidiary. Okay. Now B has acquired E. B ने E को खरीदा जो कि C की direct subsidiary थी. So in this case, ultimate control is always with A. So this is known as a common control transaction. Okay. So there was no specific guidance on common control transaction, and IFRS 3 says that if there is an acquisition, it has to be at fair value. But we have put in an additional guidance in terms of Appendix C to IND-AS 103, और हमने बोला कि अगर common control transaction है between the group transaction है, अगर ultimate parent मेरा same है, तो उस केस में we will not go by the fair value method and we will go by the pooling of interest method, which is as similar as AS 14 pooling of interest method. It means we are not required to do the fair valuation accounting. So this is known as a carve-in. Technically speaking, we have only one carve-in in this entire literature of IND-AS. Then there are some curtailment of options. So although there was a curtailment of option which was there in government grant standard also, which is IND-AS 20, but wide notification dated 20th September 2018, this curtailment of option is no more existing, and now my IND-AS 20 is largely aligned with IFRS IAS 20. So coming to the curtailment of option, there is a standard IND-AS 40 which talks about investment property. Similar standard globally is IAS 40, which is investment property. In accounting standard scenario, there is a guidance which is given under AS 13 for investment property.
So under IAS 40 says that, so first of all, we need to see what is investment property. Investment property is nothing, it's a two assets, land and building. So if it is for two purposes, capital appreciation and rental, if this two asset is held for two purposes, then it will be classified as a investment property. So IFRS says that, IAS 40 says that, if I say IAS, it means International Accounting Standard. So IAS 40 says that this investment property is subsequently measured either at cost model or at fair value model. So there are two choices which is given for measurement after recognition. So one is initial measurement, one is subsequent measurement. Initial measurement will always be at cost. Subsequent measurement दो choice दी हैं, या तो आप cost पे carry करो या fair value पे करो, ठीक है. When we come to IND-AS 40, हमने बोला बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो जिन्होंने 40 साल पहले लैंड खरीदी थी, 50 साल पहले लैंड खरीदी थी. So they have a big chunk of fair valuation reserve. There could be a big chunk of fair valuation reserve which is coming into account by using this fair value model, and probably the accounts would not be comparable. तो हमने बोला कि ये जो fair value का option आपने दिया है, cost और fair value दो option है, so we are curtailing the option of fair valuation and we will not recognize the fair value accounting for investment property, but we will provide the disclosure of fair value, that what is the fair value of that particular land and building in the notes to accounts. So this is known as a curtailment of options. Likewise, under IND-AS 1, the P&L has to be classified as either nature of function method or nature, either by a function method or by a nature method. Okay. So in IFRS, both these aspects are allowed. What is meant by function and nature? For example, if I talk about employee salary, so employee who is working into factory or employee who is working in head office or let's say finance department. So every employee's salary has to be shown under a single head, which is known as an employee benefit expense. So this is known as a nature method. What is meant by function method? If an employee who is working in the factory, so the salary has to be clubbed as a factory expenses. If an employee who is working in a head office, the salary could be clubbed as a corporate expenses. Okay, so this is known as a function method. So it means we are showing our expenses by way of function. Okay, so this is known as a function method. So under IFRS, function and nature both are allowed, but under accounting standard in IND-AS, only nature of method is allowed, and this is again a curtailment of option where we have moved ahead and we told them that we will not apply this function method. So this is known as a curtailment of option. So this was overall overview of IFRS and IND-AS. So as of now, these IND-AS are notified, wide notification dated 16 February 2015, where 39 standard were notified, and technically, so 39 become 40 on 30th March 2016, and again it become 39 on 28 March 18, and now it is 39 only. So the total number of standards are 39. Globally, there are 40 standards, and this IFRS is a collective set of international accounting standard and international financial reporting standard. So the standard which have been issued before 2001 by the predecessor committee of IASB. So earlier there was a committee known as International Accounting Standard Committee. उस कमिटी ने 1973 से स्टार्ट किया था काम करना, और 73 से 2001 तक जितने भी स्टैंडर्ड इशू किए उसका नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. 2001 के बाद उस कमिटी को डिसॉल्व कर दिया गया और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड पिक्चर में आया, और उसने डिसाइड किया कि नाउ द नीड इज to have a more and more focus on reporting rather than accounting. So that is why they have enlarged, elaborated and detailed the name from IAS to IFRS, International Financial Reporting Standard. उन्होंने बोला कि जितने पुराने स्टैंडर्ड है हम उनको रिव्यू करेंगे और इनका नाम IAS ही रहेगा, लेकिन जिनको हम डिलीट करके नए स्टैंडर्ड इशू करेंगे उनका नाम 2001 के बाद से IFRS होगा. तो आज की डेट में 16 IFRS है, ऑल्दो IFRS 17 भी आ चुका है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का, एंड देयर आर टेक्निकली 24 और 24 IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो टोटल 40 ग्लोबल स्टैंडर्ड हैं. एक स्टैंडर्ड IAS 26 है विच इज ऑन अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग बाय रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स, लाइक LIC इज प्रोवाइडिंग अ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स. तो ये जो रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान का स्टैंडर्ड है हमने इंडिया में अडॉप्ट नहीं किया. अदरवाइज इस 40 में से एक ये खत्म हो गया IAS 26, बाकी सारे के सारे एज इट इज स्टैंडर्ड हमने इंडिया में भी अडॉप्ट किए हैं. सो वी हैव 39 स्टैंडर्ड सो फार. सो this was an overview on IFRS and IND-AS. Now the learned speaker Nisha ji and Chandni will take over after this. So they will talk about the impact on financial statement and roadmap for implementation,
So I believe you have an exciting journey in the next 1 hour and 10 minutes. So I heard Nisha ji and Chandni at various occasions at various platforms. So thank you so much. Thank you, Sumit bhai. Once again. Thank you. Thank you, Alok ji, for your wonderful session. In few minutes, you have covered entire gist of IND-AS, and your book on treatise on IND-AS is very good, and I have personally read, and so many examples are there. Very fantastic book you have authored. So congratulations, and giving the star kick off on this journey of IND-AS. So thank you very much for participating. Now I request Nisha ji to take further proceeding. So thank you everyone. Sumit bhai, I have to go after 5 minutes. So I need to log off the session in 5 minutes. Okay. So thanks Good everyone. morning, everyone. Thank you so much, Team CASA. Thank you, Sumit Thank you so ji. much, sir. Thank you, Sumit ji. And thank you everyone for joining us on this webinar. Sorry, Alok sir has left due to his prior commitments. But anyway, thank you, Alok sir, for your kickoff for this series, where we'll be learning. I think we'll be having these webinars fortnightly, and we'll be learning various topics on IND-AS. So our today's topic is I-GAAP to IND-AS. So today, the overview of IND-AS is already given by Alok sir. I'll be covering a little more about overview and then the roadmap in the next 30 minutes. And then my good friend Chandni will be taking up the impact of IND-AS on the financial statements. So Alok sir has everything in his head, but I need to open my presentation to deliver my session. Please allow me a few seconds. I'll request Priyanka or Sumit to confirm me once my screen is shared. Yeah, can you please confirm me that you can Yeah, see it's my visible screen? now. Yes, 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 we are Nisha. able to see it. Yes, Now it's Nisha, it is visible. visible now. You can start. Okay, thank you. So today we'll be discussing I-GAAP to IND-AS. In the next 30 minutes, we'll be discussing why IFRS की क्या जरूरत है when we are already having one set of standards which are called as accounting standards. Then why there is a need for IFRS. Then I'll be giving you a detailed overview of IND-AS, what all standards we do have. Then what is the roadmap for implementation of IND-AS. Then we'll touch upon this about Schedule 3. And I'll give you a little brief, just 5 minutes brief on steps to convert I-GAAP financial to IND-AS financial. So let's start. Why IFRS? As already told by, already also referred by Alok sir, see, we are doing business in the global market. Like there is an investor in US and he wants to invest in India, he wants to invest in China, he wants to invest in Singapore. But all of the three countries are following different accounting standards. So when he starts comparing, when he starts taking the decision that whether I should invest in India, whether I should invest in Singapore, whether I should invest in China, he is confused because all of the three countries are using different accounting language. So he's confused and he is, supposed to do, he's supposed to incur cost and convert all those financial statements into one language. सो आप देखोगे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबल मार्केट्स हो रही हैं, इन्वेस्टर यहाँ बैठा है, उसको कहीं और इन्वेस्ट करना है, अगर उसको इन्वेस्ट करना है तो वो देखेगा उसको सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कन्वर्ट करने में बहुत कॉस्ट इंकर करनी पड़ रही है, अलग अलग अकाउंटिंग लैंग्वेज है. तो एक नीड अराइज हुई कि क्यों ना हम सबकी एक ग्लोबल लैंग्वेज हो.
क्योंकि हम ग्लोबल मार्केट में डील कर रहे हैं, सो एक ग्लोबल लैंग्वेज होनी चाहिए अकाउंटिंग की। सो यहां से नीड अराइज हुई। देन जितनी भी यू ऑल मस्ट बी नोइंग G20, जो ग्रुप ऑफ 20 ज्यूरिडिक्शंस हैं, उन्होंने डिसाइड करा कि हम सब एक सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करेंगे। हम सब एक सिंगल सेट बनाएंगे और सब उनको अडॉप्ट करेंगे, सो दैट आपस में ट्रांसपेरेंसी रहे, कंपेरेबिलिटी रहे। अगर मुझे कहीं भी इन्वेस्ट करना है, मैंने सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिए एंड आई कैन क्विकली कंपेयर कि ओके किसका कौन सी रेशो, फाइनेंशियल रेशो कैसे परफॉर्म कर रही है, कैसे बिजनेस करा जा रहा है। सो आउट ऑफ G20 कंट्रीज सबने कमिटमेंट करा कि हम सब एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में मूव करेंगे, हम सब एक ग्लोबल स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। तो इफ आई टॉक अबाउट एज ऑन डेट, अगर आप देखेंगे तो 15 ज्यूरिडिक्शंस जो है G20 में से 15 ज्यूरिडिक्शंस में ऑलरेडी मैक्सिमम कंपनीज में IFRS की परमिशन है, और जो 5 ज्यूरिडिक्शन बची हैं, जिसमें जैसे मैंने यहाँ पे लिखे, जैसे वन इज जापान में भी अलाउ है कि आप IFRS वॉलेंट्री बेसिस पे कर सकते हो। देन नेक्स्ट 3 चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, इन तीनों ने अपने अपने, जैसे अभी सर ने बताया कि अपने स्टैंडर्ड्स को कन्वर्ज करके IFRS की लाइन में स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। एंड द लास्ट वन इज यूएस का अभी भी अपना यूएस गैप है, अपना जैसे हमारा लोकल गैप जिसको बोलते हैं, हर कंट्रीज के अपने अपने लोकल गैप होते हैं। तो यूएस का अभी भी, यूएस ने IFRS जो है वो परमिट करा है कि अगर आप फॉरेन सिक्योरिटीज इशूअर्स हैं तो आप कर सकते हैं। तो आप देखोगे G20 ने जिन 20 ज्यूरिडिक्शंस ने डिसाइड करा था, उनमें ऑलमोस्ट सभी ने, एवरीबडी हैज मूव टुवर्ड्स IFRS। अगर मैं आपको ज्यूरिडिक्शन वाइज दिखाऊं, आपको ये मैप दिख रहा है पूरा वर्ल्ड का मैप, इसमें जो जो हाईलाइटेड एरियाज हैं, आप देखोगे ये अराउंड 144 ज्यूरिडिक्शंस हैं जहां पर IFRS का यूज अलाउ है। इट्स नॉट मैंडेटरी बट अलाउ है कि यस यू कैन यूज IFRS फॉर योर रिपोर्टिंग पर्पस। सो यू कैन हैव अ फेयर आइडिया कि IFRS अक्रॉस द ग्लोब कितनी जगह अलाउ है। इसमें आप देखोगे मैक्सिमम एरियाज, कुछ एरियाज को छोड़ के यहाँ पे यूरोप पूरा है, देन हमारा साउथ अमेरिका पूरा है, नीचे साउथ एशिया पूरा है, राइट साइड में ये पूरा ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर वाला एरिया पूरा है। ऑलमोस्ट आप देखोगे मैक्सिमम, जैसे अभी सर ने बताया 50% ऑफ GDP, जो अगर हम GDP की टर्म्स में बात करें तो IFRS यूज कर रही है। सो नाउ ये तो हमने डिस्कशन करा IFRS के बारे में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, जो हमने बोला सबकी अकाउंटिंग की एक सिंगल लैंग्वेज होनी चाहिए, इसलिए इसको नाम दिया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। नाउ द क्वेश्चन कम्स, देन व्हाट इज IND-AS? फिर IND-AS क्या होता है? सो लेट्स हैव एन ओवरव्यू ऑफ IND-AS. Again, this has already been covered by sir. I am just quickly covering it. So IND-AS क्या है? हमने कमिट करा कि हम IFRS अडॉप्ट करेंगे, बट व्हेन वी MCA, ICI started doing it, we noted that there are certain things in IFRS, there are certain principles in IFRS which we cannot adopt as it is. हम उसको adopt नहीं कर सकते, हमें उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, IFRS कहता है कि अगर आपने कोई भी डेट कोवेनेंट को ब्रीच करा तो आपको अपनी जो लाइबिलिटी है, सपोज आपका एक लॉन्ग टर्म लोन चल रहा है, उसमें कुछ डेट कोवेनेंट्स हैं, आपने उसका कोई भी डेट कोवेनेंट ब्रीच करा, तो आपको जैसे ही आप वो ब्रीच करोगे, आपको रिपोर्टिंग डेट में उसको करंट लाइबिलिटी में दिखाना है। बट अगर सपोज हम यही चीज इंडिया में फॉलो करेंगे, तो हम सबको पता है कि डेट कोवेनेंट्स तो किस तरीके से ब्रीच होते रहते हैं, और देन हम उसको कुछ टाइम में फिक्स अप कर लेते हैं। तो अगर सेम चीज हमारे इंडिया में अप्लाई करनी पड़े, तो हमें लगे इट्स नॉट फिजिबल, हमारे इंडियन सिनेरियो में ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे यहाँ हम कुछ बैंकर से बात करते हैं, उसको अगर हमें लगता भी है कि ये अगर कुछ ब्रीच हुआ है, तो हम उसको कुछ टाइम में फिक्स अप करके उसको ठीक कर देते हैं। तो अगर हम वो चीज, जैसे IFRS बोलते हैं कि आप उसको करंट लाइबिलिटी में दिखाओ, अगर हम उसको करंट लाइबिलिटी में दिखाएंगे तो हमारी रेशोज जो हैं वो तो ऑल टुगेदर बहुत चेंज हो जाएगा, उनमें बहुत नेगेटिव मतलब सिनेरियो हो जाएगा। तो हमने देखा कि इंडियन सिनेरियो में हम ये चीज एज इट इज अडॉप्ट नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा सिस्टम थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। तो हमने जितने IFRS थे उनमें कुछ कुछ चेंजेस करे।
देखो आप सुनोगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी लिखा था, जब भी हम IND-AS की बात करते हैं तो IND-AS है तो IFRS ही, क्योंकि वो बने IFRS की लाइन में है। लेकिन जब हम ग्लोबली बात करते हैं तो हम बोलते हैं IND-AS आर कन्वर्ज्ड IFRS। अभी हमने डिस्कशन करा कि एक होता है एडॉप्शन, जो चीज जैसे है उसको एज इट इज अडॉप्ट कर लेना, एक होता है उसमें छोटे मोटे कुछ चेंजेस करना। हाँ, तो हमने IFRS में कुछ चेंजेस करे हैं, हमने IFRS को इंडियनाइज्ड करा है। IFRS का जो इंडियनाइज्ड वर्जन है उसको हम बोलते हैं IND-AS। तो अगर लाइक वन सजेशन और वन मैसेज टू ऑल द young chartered accountants, you know, newly qualified chartered accountants who are viewing this webinar, अगर आपने IND-AS पढ़े हैं, अगर आपने अपने करिकुलम में IND-AS पढ़े हैं, या अगर आप IND-AS अभी लर्न कर रहे हो फॉर योर इंटरव्यूज और फॉर योर कैंपस, सो प्लीज हैव कॉन्फिडेंस। अगर आपको IND-AS आते हैं तो आपको IFRS भी आते हैं, क्योंकि थोड़े से ही कुछ चेंजेस हैं। आई थिंक देयर आर अराउंड एज ऑन डेट 9 कार्व आउट इन 1 कार्व इन। तो अगर आपको ये छोटे से चेंजेस पता हो और आपको IND-AS आते हैं, तो यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट इनफ इफ यू आर गोइंग फॉर अ ग्लोबल कंपनी दैट यस यू हैव द नॉलेज ऑफ IFRS। सो IND-AS is nothing but a converged set of IFRS। IFRS में हमने कुछ चीजें ऐड करी जो कि एज ऑन डेट सिर्फ एक ही है, तो IFRS प्लस 1 कार्व इन माइनस अराउंड 9 कार्व आउट इज इक्वल टू IND-AS। सो इसमें आप देखोगे अभी भी जैसे कभी हम डिस्कशन करते हैं अपने ग्लोबल काउंटर पार्ट से, तो वो कहते हैं निशा इंडिया में तो आई डोंट थिंक यू फॉलो IFRS, आपके यहाँ कुछ यू नो अपने इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, आपके कुछ अलग स्टैंडर्ड्स हैं। तो उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है कि नहीं इट इज कुछ अलग स्टैंडर्ड नहीं है, रादर दीज आर कन्वर्ज्ड IFRS। अभी आप देखोगे जो IASB है उसका भी डिस्कशन चल रहा है इंडियन गवर्नमेंट के साथ। ISB कहती है यू हैव नॉट फॉलोड IFRS, नहीं फॉलो कर रहे हैं आपने, तो अपने स्टाइल के स्टैंडर्ड्स बना लिए, आपके तो कुछ अलग ही स्टैंडर्ड है। बट इंडियन गवर्नमेंट इज कन्विंसिंग ऑन दीज कार्व आउट्स। इस पे लंबा चौड़ा डिस्कशन चल रहा है। वी आर डिबेटिंग दैट होपफुली इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स जो ISB है वो कन्विंस हो जाएगा हमारे कुछ कार्व आउट से, और शायद बाकी कुछ कार्व आउट्स जो है वो हम अडॉप्ट कर लें। सो अल्टीमेटली विल have the standards which are in line with the global standards. Now अब हम डिस्कशन करते हैं। देखो जब भी जैसे हम कह रहे हैं कि ये जो IND-AS हैं ये IFRS की लाइन में बने हुए हैं, IFRS पे बेस्ड है, तो शायद जो लोग IND-AS स्टडी करना स्टार्ट करें उनके माइंड में IFRS स्टडी करना स्टार्ट करें। आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि IND-AS तो हमारे पास 39 to 40 है, बट जब आप IFRS पढ़ने लगते हो तो IFRS सिर्फ 17 दिखाई देते हैं आपको, तो ये डिफरेंस क्यों है? तो अभी हमने थोड़ा सा इसको स्टार्टिंग में भी डिस्कस करा। 2000 से पहले जो बॉडी थी जो IFRS जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाती थी उसका नाम था IASC। वो जितने भी स्टैंडर्ड्स बनाती थी उनका नाम रखा गया IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बट 2001 में बॉडी जो है वो चेंज हुई, IASC से IASB बन गई, और 2001 ऑनवर्ड्स जितने भी स्टैंडर्ड्स मार्केट में इशू हुए उनका नाम रखा गया IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। जैसा हमने अभी डिस्कस करा कि दीज आर नॉट मेयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, रादर ये स्टैंडर्ड्स हैं जो सब कुछ कवर करते हैं, जो पूरा कंप्लीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कवर करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर में चेंज करा गया। तो जब भी आप IFRS रेफर करो किसी असाइनमेंट के लिए, किसी अपने क्लाइंट के लिए, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये डिफरेंट नाम क्या है या सेम है या कितने हैं। सो अगर आप देखोगे टोटल अभी हमारे पास, अगर हम IAS की बात करें तो 23 IAS हैं तो 1 to 41, बट मैं आपको 23 कह रही हूँ बिकॉज बीच में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो विड्रॉ हो चुके हैं। सो इफेक्टिवली देयर आर 23 IAS एज ऑन डेट एंड देयर आर 17 IFRS. So total we have 40 international standards, 40 IFRS as on date. Now, when we say that our standards are based on international standards, so this is just a summary what all accounting standards we have as on date. So you can see
टोटल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हमारे पास 40 हैं, बट अगर हम IND-AS की बात करते हैं तो हमारे पास IND-AS 13 है, 39 है, एक कम है। रीजन, IFRS 17 जो है वो इशू हो चुका है, बट हमारी गवर्नमेंट ने अभी उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड जो है वो इशू नहीं करा। सो दैट्स व्हाई इंटरनेशनली वी हैव 40 स्टैंडर्ड्स, बट इन इंडिया वी हैव 39 IND-AS। सो इस टेबल में आप देखोगे मैंने जस्ट थोड़ा सा समरी बना रखी है कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हमारे पास हैं। और एक चीज है जो मुझे आपको दिखानी है, देखो आप राइट साइड में देखोगे मैंने यहाँ पे IAS मेंशन कर रखे हैं, IAS 1, IAS 2, IAS 7। तो आप देखोगे जितने भी स्टैंडर्ड्स हमारे पास है ना, उनका नंबर सेम है। सपोज you have a knowledge of IND-AS 8 और you have knowledge of IND-AS, you are working on cash flow statement, तो आपको पता है कि आपको IND-AS 7 रेफर करना है। नाउ अगर आप किसी पर्पस के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देखना चाहते हो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड इसके बारे में क्या कहता है, सो आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं कि कॉरस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, द सीक्वेंस इज सेम। अगर IND-AS 7 है तो आप देखोगे IAS 7 है, IND-AS 8 है, IAS 8 है। तो रेफरेंस के लिए व्हेन वी आर वर्किंग ऑन ग्लोबल असाइनमेंट्स बहुत इजी हो जाता है कि यस अगर इंडिया में ये वाला स्टैंडर्ड ये वाला है तो हमारे पास बाहर भी सेम सीरीज है। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन टिल 41, मैंने आपको बोला ना 23 हमारे पास इफेक्टिवली IAS हैं, तो आप देखोगे IAS 41 तक हमारे पास सीरीज का नाम है IAS और कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास इंडिया में स्टैंडर्ड्स हैं IND-AS 41। नाउ ये जितने भी स्टैंडर्ड IFRS 1, अब आपको एक नाम दिख रहा होगा, जितने भी स्टैंडर्ड 2001 के बाद इशू हुए हैं उनका नाम रखा IFRS 1। सो जब हम कन्वर्जन कर रहे थे हमारे माइंड में क्वेश्चन आया कि IFRS 1 है, अब मैं इसको दोबारा नाम IND-AS 1 तो नहीं रख सकती बिकॉज 1 तो हमने ऊपर सीरीज दे दी है। तो हमने क्या करा, इसमें 100 प्लस कर दिया कि अगर कोई सीरीज IFRS के कॉरस्पॉन्डिंग आपको देखनी है तो उसको 100 प्लस देखना है। अगर IFRS 1 है तो हमारा स्टैंडर्ड है IND-AS 101, IFRS 2 IND-AS 102 एंड सो ऑन। सो आप देखोगे अभी तक हमारे यहाँ इंटरनेशनली IFRS 7 तक है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इशू हो चुका है इंटरनेशनली, बट एप्लीकेबल होगा जनवरी 2023 से। बट इंडिया में क्योंकि अभी भी इसमें काफी अमेंडमेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अभी नहीं इशू करा और नहीं फाइनलाइज करा because they are waiting for the international standard to settle down, then we'll issue the corresponding standard. So this was about all the standards we have as on date. Now let's move toward roadmap for implementation. This is very important. आपको पता होना चाहिए कि IND-AS जो है वो इंडिया में कब आए और किस किस पे एप्लीकेबल है। बिकॉज बहुत बार हम अपने इंडियन क्लाइंट्स पे जब काम कर रहे होते हैं तो देर आर सर्टेन थिंग्स विच वी शुड नो सो दैट वी हैव एन आइडिया दैट वेदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल ऑन आवर क्लाइंट और IND-AS इज एप्लीकेबल ऑन आवर क्लाइंट। सो जब हम रोड मैप की बात करते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट ने 3 रोड मैप बनाए या कंपनीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा। वन इज कॉर्पोरेट्स other than banks and insurance, and second road map हमने निकाला banks और NBFCs के लिए, and then third category हमने निकाली insurance companies के लिए। So जब हम road map discuss करेंगे हम 3 parts में discuss करेंगे। So let's discuss about the corporates। corporates पे किन companies पे Indian accounting standards applicable है। आप देखोगे यहाँ पे हमें दिख रहा है phase 1 and phase 2। हमने इंडियन गवर्नमेंट ने IND-AS जो है वो एक साथ सभी कंपनीज पर नहीं लगाए, हमने फेजेस में लगाए हैं। पहले कुछ बड़ी कंपनीज पे लगाए, सेकंड फेज में छोटी कंपनीज पे लगाए। सो लेट्स सी फेज 1। अगर हम फेज 1 की बात करें तो जिन भी कंपनीज की नेटवर्थ, प्लीज रिमेंबर इट इज नॉट टर्नओवर, इट इज नेटवर्थ। सो जिन भी कंपनीज की नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है उन पे IND-AS अप्रैल 1, 2016 से लग चुके हैं। उन कंपनीज की जो भी होल्डिंग, सब्सिडरी, जेवी, एसोसिएट्स होंगी उन सब पे IND-AS लगेंगे और लग चुके हैं।
जब हम इंडेस बनाएंगे, आप देखो अप्रैल 1 2016 से लगे, तो 16 से साल स्टार्ट हुआ तो मार्च 17 पे एंड होगा। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे तो एक तो मार्च 17 के बैलेंस शीट्स बनाएंगे, देन कंपैरेटिव पीरियड जो आपका मार्च 16 होगा उसको भी उन्होंने चेंज, मतलब वो कंपैरेटिव पीरियड दिखाना है। फिर जब भी इंडेस फर्स्ट टाइम किसी कंपनी पे लगता है तो हमारी 3 बैलेंस शीट बनती है। 3 बैलेंस शीट क्यों बनती है? आप सबने हमारा जो स्टैंडर्ड है, सॉरी अब मुझे एएस के ना, क्योंकि इंडेस पे काम कर रहे हैं तो एएस के स्टैंडर्ड के नंबर नहीं याद रहते, बट शायद हमारा इंडेस में वी हैव 8, जिसमें हम कहते हैं चेंज इन दिस एनी एरर, ओमिशन, चेंज इन एस्टिमेट। हमारा जो कॉरस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, वो यही कहता है जब भी आप, सॉरी इंडेस में कहता है कि जब भी आप कोई भी चेंजेस करोगे ना, अगर आप प्रायर कुछ पिछले बार की गलतियां थी जो आपकी रह गई, या आप कुछ ठीक करना चाहते हो, आपने कुछ ओमिट कर दिया, तो आपको पुराने पीछे से जाके वो रीस्टेट करना है। आपको इस साल में उसके चेंजेस नहीं करने। जैसे हम अभी तक क्या करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, कोई प्रायर पीरियड एक्सपेंस कोई भी चीज आई तो हम शायद उसका इफेक्ट इधर ले लेते हैं या उसको प्रायर पीरियड करके दिखा देते हैं, बट इंडेस कहते हैं प्रायर पीरियड नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। आपको वो बैलेंस, अगर सपोज आप मार्च 17 की बैलेंस शीट बना रहे हो, आपको कोई मार्च 16 की गलती मिली तो आप मार्च 16 को रीस्टेट करोगे। अगर आपको कोई और पुरानी गलती मिली तो आप क्या करोगे, जो ओपनिंग बैलेंस शीट है, मतलब आपका जो कंपैरेटिव है, मार्च 16 जो है वो स्टार्ट हो रहा है साल अप्रैल 1 2015 से, तो वो कहता है आप उधर जाके ठीक कर दो। लेकिन जब भी हम फर्स्ट टाइम बैलेंस शीट बनाते हैं, आप देखोगे हमारी बैलेंस शीट में तो बहुत सारा चेंजेस आते हैं, बहुत सारी चीजों को हम ठीक करते हैं। तो इसलिए स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो इतनी, अगर मैं एक बनाऊंगी जिसमें मैं ओपनिंग में इतना सब कुछ ठीक करूंगी, सो इजंट इट बेटर कि मैं एक थर्ड बैलेंस शीट ही दे दूं जिसमें मैं सब कुछ दिखा दूं। तो इसलिए जब भी आप देखोगे फर्स्ट टाइम हम किसी कंपनी के फाइनेंशियल बनाते हैं तो हम 3 बैलेंस शीट बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रांजिशन डेट बोलते हैं, जो सबसे पहला पॉइंट होगा जिसमें हमारे सारे इफेक्ट्स आएंगे। अगर मैं मार्च 17 की बैलेंस शीट बना रही हूँ फेज 1 कंपनी की, तो मार्च 16 की बैलेंस शीट भी रीस्टेट होगी जो कंपैरेटिव है, और मार्च 16 जब स्टार्ट हुआ अप्रैल 1 15 उस दिन की भी बैलेंस शीट बनेगी और सारी एडजस्टमेंट्स उस दिन में जाएंगी। तो उस फर्स्ट पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन डेट। देन सेकेंड फेज, फर्स्ट फेज में 500 करोड़ वाली नेटवर्थ पे लगा था। अब नेक्स्ट फेज आया, नेक्स्ट फेज में जितनी भी लिस्टेड कंपनीज थी उन सब कंपनीज पे इंडेस लग गए, और जितनी भी बाकी कंपनीज हैं जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है बट 500 करोड़ से कम है, उन पे भी इंडेस लग चुके हैं। उनकी होल्डिंग, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, इन सब पे लग चुके हैं। तो अगर हम एज ऑन डेट बात करें तो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उन सब पे इंडेस एप्लीकेबल है। जितनी भी बाकी कंपनीज हैं जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है उन पे इंडेस एप्लीकेबल है। सपोज आप किसी क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हो जिसका नेटवर्थ जो है लास्ट टाइम तक 200 करोड़ था, लेकिन अब आपको लगता है कि वो 250 करोड़ क्रॉस कर चुका है, सो दैट मीन्स इंडेस एप्लीकेबल है। सो आपको जो लिमिट याद रखनी है वो ये रखनी है कि 250 करोड़ से ऊपर अगर आपका नेटवर्थ आता है, या आप किसी भी ऐसी कंपनी का सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट्स हो जिस पे इंडेस लगते हैं, तो आपकी कंपनी में भी ऑटोमेटिकली इंडेस लग जाएंगे। ओके, इंडेस में एक और चीज है, अगर एक बार आपके इंडेस लग गए, सपोज आपकी फर्दर ईयर्स में आपको लॉसेस आ जाते हैं और आपकी नेटवर्थ रिड्यूस हो जाती है, तो यू कैन नॉट गो बैक टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर एक बार आपके ऊपर इंडेस लग गए तो देन आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंडेस में ही बनाने हैं। नाउ हमने यहाँ पे डिस्कस करा, हम 3 सेक्शन में डिस्कस करेंगे, कॉर्पोरेट्स, बैंक्स एंड एनबीएफसीज एंड इंश्योरेंस कंपनीज। कॉर्पोरेट्स वी हैव डिस्कस्ड, नाउ बैंक्स एंड एनबीएफसीज। अब यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखो एनबीएफसीज और बैंक्स, इन पे अप्रैल 1 2018 से इंडेस लगने थे। अब 2018 में एक नोटिफिकेशन आई अराउंड आई थिंक अर्ली अप्रैल, इट वाज यस अप्रैल 5th को एक नोटिफिकेशन आई जिसमें आरबीआई ने बोला
कि बैंक्स पे IND-AS नहीं लगेंगे। अब पूरी मार्केट में जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि लगने दोनों पे थे, बैंक्स पे नहीं लगेंगे तो NBFCs का क्या होगा, राइट? बहुत सारा मार्केट में कंफ्यूजन आया कि NBFCs पे लगेंगे या नहीं लगेंगे। NBF अगर आप देखोगे RBI जो है, NBFC भी तो RBI को रिपोर्ट करते हैं, तो दोनों की एक तरीके से बॉडी तो सेम ही है। तो बट RBI ने बैंक्स के बारे में बोला, NBFC के बारे में कुछ नहीं बोला। तो कुछ टाइम तक तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा मार्केट में, बट फिर ये क्लैरिटी आई या सबने बनाने स्टार्ट कर दिए कि NBFCs पे IND-AS लग गए। तो NBFCs पे अप्रैल अगेन 2 फेजेस में आया। फेज 1 अप्रैल 1 2018 से स्टार्ट हुआ। अगर आप पीछे जाके देखते हैं, स्टार्ट हुआ कंपनीज पे 16 से स्टार्ट हुआ। फेज 2 कंपनीज पे 17 से स्टार्ट हुआ। NBFCs पे फेज 1 18 से स्टार्ट हुआ। फेज 2 अप्रैल 1 19 से स्टार्ट हुआ। लिमिट सेम है। अगर NBFCs की नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है तो वो फेज 1 में आती है, मतलब अप्रैल 1 2018 से उन पे IND-AS लग चुके हैं। अगर बाकी कोई भी लिस्टेड NBFC है या NBFC का नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है तो वो फेज 2 में आती हैं, उन पे अप्रैल 1 2019 से IND-AS लग चुके हैं। नीचे की चीज सेम है, आपको एक कंपैरेटिव पीरियड देना है और एक आपकी ट्रांजिशन डेट होगी जिसपे आपको सारी कैलकुलेशंस करनी है, मतलब वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। नाउ बैंक्स का मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में 2016 में एक नोटिफिकेशन आई थी जिसने बोला था कि 2018 से बैंक्स और NBFCs पे लगेंगे, बट अप्रैल 5 2018 में एक नोटिफिकेशन आई कि नहीं, बैंक्स पे अगले साल से लगेंगे। उसके बाद फिर एक नोटिफिकेशन आई 2019 में कि नहीं, अभी भी हमें कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, लेजिस्लेटिव चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, तो अभी डेफर कर दिया टिल फर्दर नोटिस। सो एज ऑन डेट आप देखोगे, हम सब बैंक ऑडिट्स करते हैं तो हमें पता है बैंक ऑडिट्स तो जो बैंक का अपना रिक्वायरमेंट होता है हम उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, उसमें IND-AS वगैरह कुछ नहीं है। तो एज ऑन डेट बैंक्स पे IND-AS नहीं है, बट यस बैंक्स ने वर्किंग कर रखी है। बैंक्स रिपोर्ट करते हैं, आई थिंक हाफ ईयरली बैलेंस शीट्स वगैरह फाइनेंशियल्स बना के RBI को सबमिट करते हैं। नाउ इंश्योरेंस कंपनी पे भी एज ऑन डेट नहीं एप्लीकेबल। इसका रीजन यही है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो IFRS है, रीजन डेफरमेंट का यही है। इंटरनेशनल लेवल पे IFRS 17 इशू तो हो गया है, लेकिन उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की एक्सपेक्टेशन है कि जो फाइनल नहीं हुई अभी तक। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम अभी जब IFRS 17 सेटल हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, तभी हम यहाँ पे भी अपना स्टैंडर्ड बनाएंगे और हम तब IND-AS लगाएंगे इंश्योरेंस सेक्टर पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट रोड मैप। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि जब आप IND-AS की बैलेंस शीट बनाने लगेंगे तो आपको बैलेंस शीट कैसे बनानी है। तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं? हमारे पास एक शेड्यूल 3 है जिसमें हमें फॉर्मेट दे रखा है कि आपको बैलेंस शीट ऐसे बनानी है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे बनाना है, देन कैश फ्लो आपको इस तरीके से बनाना है, नोट्स में क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। तो ये सारी चीजें हमें शेड्यूल 3 बताता है। तो जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हम शेड्यूल 3 का डिवीजन 1 फॉलो करते हैं, बट जब हम IND-AS के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो शेड्यूल 3 का डिवीजन 2 हम फॉलो करते हैं। वो डिवीजन 2 जो है वो पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है। सॉरी, ये स्क्रीन थोड़ा छोटा है इसलिए मैंने आई ट्राइड बट आई कुडंट ब्रिंग द फॉर्मेट हियर। दैट वाज इनटू स्प्रेडिंग गोइंग इनटू 2-3 पेजेस। आप देखोगे जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाते हो तो आपका आई थिंक हेल्प मी चांदनी इफ यू आर देयर, हम क्या चीज ऊपर दिखाते हैं? वी शो एसेट्स और लायबिलिटीज। आप देखोगे दोनों में ड्रास्टिक चेंज है। जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर आप एक बैलेंस शीट देखोगे डिवीजन 1 वाली और आप एक IND-AS वाली बैलेंस शीट देखोगे डिवीजन 2 वाली, तो आप देखोगे उसमें ऑल टुगेदर चेंज है। अगर एक बैलेंस शीट एसेट से स्टार्ट हो रही है तो दूसरी बैलेंस शीट आपकी लायबिलिटी से स्टार्ट हो रही है। ऑल टुगेदर बिल्कुल फॉर्मेट में चेंज है। फिर आप देखोगे जो हमारा फॉर्मेट है वो हमें बोलता है बैलेंस शीट बनाना है आपको। देन एक नया स्टेटमेंट आया है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जिसको सोकी भी बोला जाता है, कि आपको इक्विटी में जो भी चेंजेस आए आपको वो अलग से, उन्होंने रिक्वायरमेंट है कि आपको अलग से एक फॉर्मेट है, आपको इसी तरीके से दिखाना है। अभी तक तो हम क्या करते हैं
हम एक इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बना देते हैं, ओपनिंग, इशूड ड्यूरिंग द ईयर एंड क्लोजिंग, इस तरीके से बनाते हैं। ये थोड़ा सा डिटेल्ड फॉर्मेट है। देन पीएनएल में भी चेंज है। आप देखोगे अभी तक हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। अब जो रिक्वायरमेंट है उसमें पीएनएल के 2 पार्ट्स हैं। ऊपर आपका प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा और नीचे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनेगा। IND-AS 1 में दे रखा है स्पेसिफिकली कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या क्या चीजें जाती हैं। और इफ विल हैव अनदर सेशन ऑन दिस, वी कैन डिस्कस दिस इन डिटेल कि OCI, इसको हम OCI भी बोलते हैं, कि इसमें क्या चीजें आती हैं। जस्ट क्विक इंफॉर्मेशन, जब आप EPS निकालते हैं किसी भी कंपनी का या आप ऑडिटर हैं तो IND-AS कंपनी का ये ध्यान रखना, जब हमें EPS के लिए प्रॉफिट लेना होता है तो वो प्रॉफिट OCI से पहले का होता है। कई बार मतलब हमने देखा है जो कुछ छोटी कंपनीज होती हैं, जब हम उसका बना रहे होते हैं हमें इतना ज्यादा पता नहीं होता, हम टोटल प्रॉफिट कैप्चर कर लेते हैं EPS के लिए। देन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आपको बनाना है। दिस इज ऑल सेम नोट्स आपको बनाने हैं, बट यस बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आप देखोगे काफी चेंज है। आपको बैलेंस शीट जो है वो 2 पार्ट्स में दिखेगी। एसेट साइड में फाइनेंशियल एसेट्स, नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, लाइबिलिटीज साइड में फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। सो सारी चीजें, पूरी बैलेंस शीट जो है वो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल 2 पोर्शन में ब्रेक हो गई है। अभी तक आपने देखा होगा जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो हम जो हमारे वो लास्ट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं 29, 30, 31, हम उनसे दूर रहते हैं, राइट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो बोलते हैं कि हम कहते हैं कि ये मैंडेटरी तो है नहीं तो इनको स्किप कर सकते हैं, बट ये ही स्टैंडर्ड जो है वो IND-AS की बैकबोन है, जिसको मैं बोल रही हूँ फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। वहां पे पूरी बैलेंस शीट का, आपका बैलेंस शीट का आधा पोर्शन तो यही लेके जाएंगे। या जैसे अगर मैं बैंक्स पे जब लगेंगे तो आप देखोगे बैंक्स पे तो पूरा यही स्टैंडर्ड्स काम करेंगे। NBFCs की बैलेंस शीट आप उठा के देखो, उनमें सब कुछ फाइनेंशियल एसेट्स, ऑलमोस्ट कुछ आइटम्स को छोड़ के 70% तो फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज होती है। So if you have clients like NBFCs or banks, then you should have very thorough knowledge of IND-AS. Now, I am summarizing. I'll request Team CASA to have a detailed session on this portion, like how we should practically convert I-GAAP financial to IND-AS financial. I know I won't be doing justice by showing you one screen on this, but trust me, I'll request Team CASA to have a detailed session, around 2-hour session on this topic. So in this slide, I'm just summarizing you. Suppose you are an auditor of a company who is year 1 IND-AS company, उस पे IND-AS अभी लगे हैं और आप उस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो। सो एज एन ऑडिटर आपको पता होना चाहिए कि मैं कंपनी ने कैसे करा और मुझे कैसे चेक करना चाहिए। या फिर इफ यू आर अ कंसल्टेंट, अगर आपका क्लाइंट जो है वो कहता है आप मेरे IND-AS फाइनेंशियल्स बना दो, तो बीइंग अ कंसल्टेंट आपको पता होना चाहिए कि अगर लास्ट ईयर तक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स I-GAAP में बन रहे थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बन रहे थे, और अब अगर आपने IND-AS के अकॉर्डिंग बनाने हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आपको IND-AS की नॉलेज तो है, बट यू आर सम टाइम वी आर कंफ्यूज दैट वी डू नॉट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, कहां से शुरू करें, कैसे करें। सो आई हैव समराइज्ड इन 5 स्टेप्स आपको कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आप की डेट्स आइडेंटिफाई करो। की डेट्स में जिसमें है ट्रांजिशन डेट। अभी मैंने आपको बताया, सपोज अब जैसे हम मार्च 20 में है, आपका कोई क्लाइंट है जिसकी नेट वर्थ 250 करोड़ से एक्सीड कर जाती है, तो आपको लगता है कि यस इस पे IND-AS एप्लीकेबल होंगे। तो सबसे पहले आप ये देखो, जब भी आप IND-AS की वर्किंग स्टार्ट करोगे ना, आपको सबसे पहले ट्रांजिशन डेट पता होनी चाहिए। तो ट्रांजिशन डेट इज आवर की डेट। अगर मेरा साल मार्च 20 पे खत्म हो रहा है तो मार्च 20 वाले साल में तो एप्लीकेबल होंगे। मार्च 19 वाले आपको रीस्टेट करने हैं, मतलब सारी एडजस्टमेंट उसमें भी करनी है। और मार्च 19 वाला साल कब स्टार्ट हो रहा था? अप्रैल 1, 2018। तो अप्रैल 1, 2018 जो है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। आप सारी वर्किंग्स अप्रैल 1, 2018 में करोगे। और फिर हमारा एक स्टैंडर्ड अलग से IND-AS 101, वो हमें बताता है कि कैसे करनी है वो वर्किंग्स, राइट। सो अगर आप
मेरा कहने का मतलब ये है, कई बार क्या होता है हम गलती करते हैं, मार्च 20 से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मार्च 20 से काम करना नहीं स्टार्ट करना, मार्च 20 वाले साल में तो लगा है IND-AS, लेकिन मार्च 20 का कंपैरेटिव मार्च 19 है, और मार्च 19 स्टार्ट हुआ था अप्रैल 1 2018 से। सो अप्रैल 1 2018 इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, वो आपकी की डेट है, आपने आइडेंटिफाई कर ली। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज सिलेक्ट करनी है, आपको डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करने हैं कि पहले वाले IGAP में क्या चीजें थी और नए वाले स्टैंडर्ड्स में IND-AS क्या बोलते हैं। तो इसके लिए ना एक स्टडी होती है जिसको हम बोलते हैं, मतलब व्हेन यू विल वर्क ऑन IND-AS, और जब आप क्लाइंट क्या जाओगे, आप ये टर्मोलॉजी, ये टर्म बहुत सुनोगे, डायग्नोस्टिक स्टडी। मतलब आपके क्लाइंट ने IND-AS लगाए, आप ऑडिटर हो, तो आप पूछोगे तो ना सर कैसे लगाए, कौन से एरियाज में चेंज आए, आपने कैसे पता लगाया। तो ये जो डिटेल डॉक्यूमेंट है इसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक स्टडी। वेदर यू आर एन ऑडिटर और यू आर अ कंसल्टेंट, आपको डायग्नोस्टिक स्टडी होनी चाहिए आपके पास, यह आपने बनानी है। डायग्नोस्टिक स्टडी में क्या होता है, जैसे हमने बैलेंस शीट ली, बैलेंस शीट का मैंने एक एक लाइन आइटम उठाया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस, फिर मैं उसके अंदर नोट में गई, राइट। देन नोट में आप देखोगे नोट भी कैसे बना, फिर आप नोट के अंदर TB लेवल पे जाते हो, राइट। नोट कहाँ से बना, जिसको हम ग्रुपिंग बोलते हैं, वो हो सकता है नोट में 5 चीजें आ रही हैं लोन्स एंड एडवांसेस में, लेकिन जब मैं TB में जाऊंगी तो वो कम से कम 100 लाइन आइटम का प्लस करके होगा। तो आपको नोट के भी अंदर जाना है, आपको TB तक लाइन आइटम में जाना है, और एक एक चीज एनालाइज करनी है कि इसमें AS क्या बोलता है और इसमें IND-AS क्या बोलता है, क्या दोनों की पॉलिसीज में, क्या दोनों के रिकॉग्निशन में, क्या दोनों के मेजरमेंट में, क्या दोनों के वैल्यूएशन में कोई डिफरेंस है या नहीं है। इफ देयर इज अ डिफरेंस देन यू हैव टू टिक, मुझे इसमें फर्दर काम करना है। तो इसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक स्टडी। आपको एक एक लाइन आइटम, एक एक TB का, मतलब टिल TB लेवल आपको ड्रिल डाउन करना है, और एक एक चीज एनालाइज करनी है कि I-GAAP वर्सेस IND-AS में क्या प्रिंसिपल्स में डिफरेंस है, एंड यू हैव टू डॉक्यूमेंट इट। If you are consultant, obviously you will be submitting it to the management. If you are auditor, you will be asking it from the client that show me how did you do it. Then the next one is, आपने ये सारी एक्सरसाइज कर ली कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट है हमारा एक स्टैंडर्ड है 101, IND-AS 101, जो IFRS 1 पे बेस्ड बना है। वो स्टैंडर्ड हमें बोलता है कि जब आप पहली बार IND-AS में आ रहे हो तो हम आपको कुछ मैंडेटरी एक्सेप्शंस दे रहे हैं कि अच्छा ये चीजें छोड़ दो, ये मैंडेटरी छोड़ दो, और कुछ वॉलेंट्री एग्जाम्पशंस दे रहे हैं कि आप चाहो तो इनको ये क्या एग्जाम्पशंस हैं, देखो जो IFRS है, जो IND-AS है, वो बोलते हैं आपको कुछ भी करना है ना, कुछ भी चेंज करना है, आपको सब कुछ डे 1 से करना है, आपको स्टार्टिंग से जाके करना है। अगर आपके लोन के बैलेंस में कोई चेंज है और आप मार्च 20 की बैलेंस शीट बना रहे हो, आपका अप्रैल 1 2018 ट्रांजिशन डेट है, लोन लिया था 15 में, तो वो कहता है 15 से कैलकुलेशन करो, सारी चीजें स्टार्टिंग से करो। तो ये 101 का स्टैंडर्ड बोलता है कि नहीं, कुछ हम आपको मैंडेटरी एक्सेप्शन दे रहे हैं, कुछ केसेस में आप स्टार्टिंग से मत करो, छोड़ दो, कुछ केसेस में हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आप चाहो तो स्टार्टिंग से कर सकते हो, नहीं तो जो स्टार्टिंग की डेट में, जो आपकी ट्रांजिशन डेट में अप्रैल 1 में आप उसी को लेके आगे बढ़ जाओ। तो ये कुछ चीजें दे रखी हैं, तो हम थर्ड स्टेप में वो देखते हैं। देन फोर्थ स्टेप में आपने जहां जहां सेकेंड स्टेप में टिक करे थे, अब आप उनकी कैलकुलेशन करना स्टार्ट करोगे कि अच्छा पुराना स्टैंडर्ड में ये था, नए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं, और जितना भी डिफरेंस आएगा, अप्रैल 1 2018 हमारे एग्जाम्पल में ट्रांजिशन डेट थी, जितना भी डिफरेंस आएगा सब कुछ उठा के, जो ट्रांजिशन डेट है हमारी एग्जाम्पल में अप्रैल 1 2018, उसके रिटेन अर्निंग में डाल देंगे। ये हमें स्टैंडर्ड बोलते हैं, 101 का स्टैंडर्ड है, जो जब आप फर्स्ट टाइम करोगे बस तभी यूज करना है आपको। देन आपने अप्रैल 1 2018 पे सब कुछ ठीक ठाक कर लिया, सारे बैलेंसेस IND-AS के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लिए, डिफरेंस जो है वो आपने रिटेन अर्निंग में डाल दिया। फिर आपका कंपैरेटिव पीरियड आता है अप्रैल 1 2019, वो कहता है अब उसको ठीक करो, सारा उसको रीस्टेट करो। देन आप करंट ईयर पे तो एप्लीकेबल ही ऑब्वियसली, तो आप करंट ईयर की सारी कैलकुलेशंस करोगे। So this was a summary of the steps you need to perform when you actually transit from I-GAAP to IND-AS. Now I am stopping here.
If you have any question, either you can ask now or we can take up at the end. I'm open in both the options. Thank you, So, Nisha, and wonderful presentation. And few questions are there. I think that should be covered later on. Shaileji asking about non-applicable on corporate entity having net worth less than 250 crores in days. Nisha, in companies with net worth of less than 250 crore unless and until you are JV, associate or subsidiary of any company on which IND-AS is applicable. okay, I have confirmed. And another question is there date notify from where they need to follow? I think. See, ये जो dates है ना, ये starting के लिए थी. Okay. जब हम ट्रांजिशन में चल रहे थे. अब आप ऐसा समझो एज ऑन डेट आप देखो, अगर कभी भी आपकी टर्नओवर 250 सॉरी आपकी नेटवर्थ 250 करोड़ को क्रॉस करती है तो आपको उस साल में IND-AS एप्लीकेबल हो जाएंगे. Okay. And Gaurav Madanji, I would request please post your query clearly. And Susanji, please clarify assets में what you want to ask. And Sandeep ji is saying thanks for good presentation. Naresh Jain ji net worth. Naresh Jain ji का question है net worth to be calculated at the beginning or at the end of the year. अगर हम सपोज हमारा ये ईयर है 2021 राइट, तो अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरा इस साल में नेटवर्थ क्रॉस हो जाता है तो मेरा इस साल में IND-AS एप्लीकेबल हो जाएगा. Okay. Now queries you can post, we can cover in the last. Request with Chandni ji to take further session. Thank you so much. Thank you, Sumit sir and Team CASA for this wonderful opportunity. And Alok sir is not here with us, but yeah, this is going to be there on YouTube. So thanks to Alok sir for such a wonderful kickoff to our IND-AS series. And guys, I'll tell you, this is going to be here. Like we'll conduct these webinars fortnightly, and we have also created WhatsApp groups, and you can join there and post your IND-AS related queries and get all the solutions from all the experts, right? So Alok sir is there, Nisha ji is there, so all the experts are there and you can get the guidance through WhatsApp. So yes, and thanks to Nisha ji for such wonderful session, and she has explained the roadmap, the applicability and everything very clearly. So I'll quickly share my screen so that yeah, my presentation is visible. Yeah, I hope the Yes, it's my screen is visible. Yeah, okay. So let's start with the third leg of this webinar. So first of all, let's quickly revise what we have learned so far. Alok sir has told us about everything that is going on, right? What is the global reporting? What is the Indian reporting? Why it was needed and everything. Nisha ji further explained to that and explained what are IFRS, how did IFRS come, right? IASB is the board that issued IFRS. Pre 2001 era, there was IASC, right, which issued IAS, and post 2001 IASB was implemented, IASB was set up, and it issued IFRS. So IAS and IFRS are one and the same thing. So there was some question also that what is the difference between IAS and IFRS. So let me clear, IAS and IFRS are both in international financial reporting standards, and they are a part of one set of accounting standards, right? It is just a change in name. And accordingly, so like about IFRS, Nishaji has explained everything, so we will not cover here. IND-AS came in February 2015, and it was implemented in a phased manner, the roadmap to which has been explained by Nishaji very clearly. With respect to adoption and convergence that Alok sir was talking about,
that IFRS has been adopted by a lot of the countries, but in India, we have not adopted IFRS as is, right? We have converged with IFRS. So there are some carve-outs, carve-ins, and some curtailment of options. Now, as Nishaji told that there are 40 IFRS, and in India, we have 39 IND-AS corresponding to 40 IFRS. Why? Because there is one standard in international market that has not been issued and implemented in India as of now. Now, also, when we speak about IFRS, there are 40 standards and there are 15 interpretations. That is also a part of IFRS only. So when we talk about IFRS, it includes 40 IFRS and 15 interpretations. In India, what we have done is we have 39 IND-AS, but corresponding to those interpretations in international market, we have formulated appendix to IND-AS. So they have become an integral part of standards, right? So this is the list of applicable standards that Nishaji has explained very comprehensively. So we will also move past that. Yeah, so as we speak, there are two set of gaps in India, right? First is the I-GAAP, the accounting standards which were introduced back in 2006, right? And now from 1st April 2015, we also have IND-AS. So as we speak, there are two set of accounting standards applicable in India, I-GAAP and IND-AS. Now, the introduction of IND-AS came with an implementation roadmap कि किस किस कंपनी पे IND-AS लगेगा, किस किस कंपनी पे IND-AS नहीं लगेगा, जो कि निशा जी ने आपको अच्छे से बताया, right? So the roadmap was introduced for the corporates other than banking, insurance and NBFC. Then on 30th March 2016, implementation roadmap for NBFCs came along. And insurance and banking companies are still not applying IND-AS. Why? Because RBI and IRDA has deferred the implementation, right? Now, with respect to the applicability, Nishaji has also explained Schedule 3 applicability. Now, before the introduction of IND-AS, there was only one Schedule 3, right, which was applicable for all the companies applying accounting standards. Now, what is Schedule 3? It gives us a format of balance sheet and P&L. Right now, when the IND-AS were introduced, they made 3 divisions to Schedule 3. Why? Because there are now 3 categories of companies. One, which are applying accounting standards. Second, which are applying IND-AS, but they are not NBFCs. Third, the NBFCs which are applying IND-AS. So there are 3 divisions to Schedule 3, and these 3 divisions are very, very separate from each other and very different, right? So one needs to be very careful while referring to a particular division of Schedule 3 and consider that which set of accounting standard is applicable on the company, and accordingly, respective division will be followed. Now, let's talk about what has been the impact of such a change on the financial statements. So first of all, the major and prima facie change is due to Schedule 3 only. What? Because Division 1 says equity part and liability part should come first on the balance sheet and then the assets should come. But Division 2, which is applicable for the companies applying IND-AS, and these are not the NBFC companies, right? This division says that assets should come first and then equity and liability should come. So what are we saying? We are saying that the balance sheet has been turned upside down completely. So whenever you're looking at a balance sheet, you can quickly say whether IND-AS is applicable or I-GAAP is applicable. If the assets are coming first, IND-AS is applicable. If equity and liability is coming first, I-GAAP is applicable. So as simple as that. Now let's talk about the complete set of financial statements under IND-AS. We have heard many of these terms already, and we have prepared these statements all our lives, right? So first of all, balance sheet.
as we all prepare, as we all know, we are very clear on that part. Statement of profit and loss. Obviously, we all have been preparing statement of profit and loss all our lives. But what is different now? In IND-AS, third statement, if you will see, statement of changes in equity. This statement is a new statement that has been introduced in IND-AS. And as Nisha ji also explained while explaining Schedule 3, that this statement requires what? It gives a complete reconciliation, a complete movement in the reserves and surplus part of the balance sheet. Right? So earlier in I-GAAP, companies used to give a note, a schedule of the reserves and surplus. But in IND-AS, they have to give a statement, a separate statement, which will show the movement in reserves and surplus. And it is bifurcated for each and every reserve and OCI. So we'll talk about OCI later on. But for now, let's understand this is one statement which is additionally introduced in IND-AS and we need to prepare it. Right? Fourth statement, statement of cash flows. This is also something that we all are aware of. We all are preparing it already, right? Nothing new. Fifth, notes. Notes also are very common. We all have been preparing, but what is different? In IND-AS, the disclosures have become so comprehensive, so extensive that, you know, earlier the balance sheet used to be for how much? Max to max 60, 70 pages, but now it crosses 100, 150 pages. Why? Because the disclosures are so extensive and there are additional disclosures required. Right? There are complete standards like 112. IND-AS 112 is specifically on disclosures. 107, which is specifically on disclosures. So IND-AS requires detailed disclosures on each and every aspect. So there is a difference between notes as we used to prepare under I-GAAP and that now we prepare under IND-AS. Sixth is the comparative information that we all know. We need to give comparative information. If you are preparing a balance sheet for 2020, say as on 31st March 2020, you need to give comparative for 31st March 2019. So nothing new. Now, seventh statement that Nisha ji also talked about. Third balance sheet. And I think there was one query that can you repeat about third balance sheet? So I will tell you what this third balance sheet is and when do you have to prepare it. First of all, third balance sheet is not that you have to give, say you are preparing balance sheet for 2020. The current balance sheet is 31st March 2020. Comparative is 31st March 2019. But third balance sheet doesn't mean you have to give 31st March 2018. But it is an opening balance sheet for the previous year. That means you need to give balance sheet for 1st April 2018, not 31st March 2018. Right? So this is, numbers would be same, more or less, but the balance sheet is to be given for an opening number. Right? So as you can see, third balance sheet as at the beginning of the preceding period. Because for 2020, preceding period is what? 18-19. Hence, the opening is 1st April 2018. Now, when do we have to prepare this third balance sheet? That is the main question. Right. First of all, when there is a first time adoption of IND-AS, as Nisha ji also explained, that you have to apply IND-AS 101 at the first time adoption of the IND-AS. That time you need to prepare third balance sheet. Then again, whenever there is a retrospective change in accounting policy, any change, any prior period item, any prior period error, omission, anything happens, then also you need to prepare a third balance sheet. Right? And also when you reclassify the items in financial statements. So earlier in I-GAAP, what we used to do, if there is a change in accounting policy, we will take a retrospective impact, but it does not mean that we restate the preceding period numbers. Right? We will go forward, we will take the impact retrospective, but we will apply it prospectively. But in IND-AS, we take the impact retrospectively and also we apply it retrospectively. We restate the numbers, we restate the balance sheet, we prepare a third balance sheet to give an overall view. Right? So this is the significance of third balance sheet.
And this is very important because we see a lot of prior period items coming up, right? But if even if you are applying IND-AS, you don't give much attention to it, and you'll present it in the expenses part, because prior period items are prohibited under IND-AS, right? Earlier in statement of profit and loss, if you have any prior period error, omission, any prior period item, on the face of P&L, you used to give a prior period item. But under IND-AS, that is prohibited. You cannot give prior period item on the face of P&L, right? Either you restate the balance sheet, you give a third balance sheet, you restate the numbers, or else what you do is, if it's not that material, you club the number in the expense part only. You don't show it separately. You can show it in the notes, obviously, but you don't show it on the face of P&L. Right, so this is a difference. When you're applying IND-AS, you need to be careful about this part also, because if you have any prior period item, you need to present a third balance sheet. Now, moving on to the most important part that we are here for, the impact on financial statements. So let me tell you that introduction of IND-AS has brought a lot of changes, a lot of a lot of efforts and costs has gone by for the companies. The ratios have changed, as Nisha ji also mentioned, that the financial ratios have changed a lot. There are certain particular IND-ASs which have brought tremendous change. For example, IND-AS 116, if we talk about leases, right, in I-GAAP, there used to be AS 19. But under IND-AS, IND-AS 116 was introduced on 31st March 2016. 31st March 2019, from 1st April 2019, right? That IND-AS 116 changed the entire accounting for lessees. Earlier, as in AS also, the lessees are bifurcating leases into operating and finance leases, right? The finance lease comes on the balance sheet. Why? Because you show an asset in your balance sheet and a liability for finance lease obligation, right? But under IND-AS 116, now lessees are not required to classify. They are required to treat all the leases as finance lease only. So earlier, all the operating leases which we were not showing on the balance sheet will now be shown in the balance sheet. So there is a tremendous addition to the asset and a tremendous addition to the liability side, right? So the ratios will change. The impact on P&L, if you'll see, the operating profits will decline, right? So some major changes have occurred due to IND-AS. Now let's go one by one and try to understand what are the minute changes or major changes that IND-AS have brought. First of all, we have already discussed the format of financial statements. The balance sheet has been turned upside down, right? So that is a very prima facie change. So you can also identify which accounting standard is being applied on the company's financials. Second, explicit and unreserved statement of compliance with all IND-AS that is required in the notes. So let me tell you, IND-AS 1, right? IND-AS 1, which is on presentation of financial statements, requires all the companies which are applying IND-AS to give an explicit and unreserved statement of compliance. ये क्या होता है? So basically, let me tell you, AS में क्या होता था कि कंपनीज इस तरीके का कोई स्टेटमेंट अपने फाइनेंशियल्स में नहीं देती थी कि वी आर कंप्लाइंग विद ऑल द AS. इट वाज द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपनी रिपोर्ट में दे दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू. एंड ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब होता था दे कंप्लाई विद ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. बट इन IND-AS मैनेजमेंट को खुद एनालाइज करना है, खुद कंप्लायंस चेक करना है और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बेसिस ऑफ प्रिपरेशन में या उससे पहले या उसके नीचे कहीं पे भी स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस देना है कि वी आर कंप्लाइंग विद ऑल द IND-AS. इफ यू आर नॉट कंप्लाइंग विद इवन वन IND-AS, that statement of compliance is null and void. So you need to comply with all the IND-AS. If there are any exception, if the company cannot apply a particular IND-AS, there has to be valid reasons.
right? They need to justify that why the IND-AS is not being applied. Okay, so this is one major impact, one addition in the responsibility of the management. Third part, we have already discussed the third balance sheet that we need to prepare at the time of first time adoption, and whenever there is a retrospective adjustment in accounting policy, or whenever there is a prior period correction, or whenever there is a reclassification of items in the balance sheet, right? Fourth part is statement of changes in equity. As we all discussed, there is an additional statement that the companies need to give under IND-AS, that is a statement of changes in equity. So this statement presents a movement in reserves and surplus that we have already discussed. Moving on, the concept of other comprehensive income. Now, what is this? बिकॉज आपने किसी से भी इंडेक्स के बारे में समझा होगा या पढ़ा होगा, कहीं पे भी ओसीआई करके बहुत आता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. ये किस चिड़िया का नाम है, राइट? सो लेट मी टेल यू कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो हम बनाते हैं इंडेस में, it basically has two sections. The first section is the profit and loss जो हम normally बनाते थे, which shows the profit for the period, right? But जो second section है, that is the other comprehensive income part. Basically ये एक इस तरीके का सेक्शन बना दिया गया है to reflect certain items जिनको आप P&L से राउट नहीं कर सकते, राइट? फॉर एग्जाम्पल रिवैल्यूएशन रिजर्व, जब भी आप किसी पीपीई को, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिवैल्यू करते हैं, तो उसके रिजल्टिंग जो भी गेन होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व जो बनता है, वो ओसीआई में रिफ्लेक्ट करता है, एंड दिस ओसीआई इज देन रिफ्लेक्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. ये मेरे रिजर्व्स का पार्ट बन जाता है, राइट? सो this is nothing but a part of statement of profit and loss. Now moving on, earlier क्या होता था, under I-GAAP all the items of assets and liabilities were classified as current or non-current, right? But under IND-AS there has to be a classification of all the items under current and non-current, and also financial and non-financial. Right, so companies now need to identify all the financial instruments, right? There are three IND-AS, separate IND-AS which are applicable on financial instruments: IND-AS 32, IND-AS 109 and IND-AS 107. Three Indian accounting standards are applicable on the financial instruments. Hence, companies are now required to classify their assets and liabilities into financial and non-financial, and they have to give a presentation on the face of balance sheet. So say there is a current liability, then within current liability, they have to show current financial liabilities, and non-financial liabilities will come afterwards. So this is the kind of presentation that IND-AS demand now. Right, so there is obviously an addition to the efforts that will be required to prepare IND-AS. बहुत सारे analysis लगेंगे, assessment लगेगा, judgment लगेगा, since these are principle based accounting standards and not rule based. So there is a lot of judgment estimation that is required from the management side. And auditors के लिए भी responsibility बढ़ गई है, because उस चीज को validate कैसे करेंगे, right? तो एक तरीके से देखा जाए तो चीजें बहुत ज्यादा सॉर्ट आउट हो गई हैं, चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो गई हैं, काफी लॉजिकल हो गई हैं, बट देन ऑब्वियसली काम थोड़ा सा बढ़ गया है. बट यू ऑल विल अग्री कि काम अच्छे के लिए बढ़ा है. द प्रेजेंटेशन हैज बिकम बेटर, द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हैज बिकम फेयर, राइट? इट हैज बिकम it is already now at international level. It is at par with the international financial statements. So this was required, and this is high time that we all understand, we all are clear on the IND-AS part, because soon AS will also align with the IND-AS. तो जब accounting standards भी IND-AS के principles पे चलने लगेंगे, तो IND-AS तो आपको समझना पड़ेगा. So this is the whole idea. Now moving on, जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं IND-AS में, एक एडिशनल डिस्क्लोजर देना होता है चेंजेस इन लायबिलिटीज का. अब इसमें क्या होता है कि
अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज आपकी कोई फॉरेन एक्सचेंज लाइबिलिटी, आपने फॉरेन एक्सचेंज लोन लिया हुआ है, राइट, तो उसमें जो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस का मूवमेंट होगा वो कैश फ्लो में तो कहीं दिखेगा नहीं, पर उसको आपको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आपको एक पूरी एक रिकंसिलेशन देनी पड़ेगी कि आपने जो कैश फ्लो में दिखाया, जो फाइनेंशियल्स में लोन का नंबर आ रहा है, वो कैसे टैली कर रहा है। सो दिस इज एन एडिशनल डिस्क्लोजर। नाउ मूविंग ऑन, इसमें से कुछ मेन चीजें मैं आपको बताती हूँ जिस तरीके से जैसे कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे बात करते हैं, बिकॉज दैट इज वन मेजर चंक ऑफ द इंटायर इंडेस, राइट। पहले क्या होता था, अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को आप कहाँ क्लासिफाई करते थे, मेरे को आप सब बताइए, इवन आई विल लुक एट दी आंसर्स। ओके, जस्ट अ सेकेंड, आई विल share my screen again, and yeah, now I can see you all as well and the screen as well. Can you see my screen? Cool. Okay, so I need to know, पहले जो प्रेफरेंस शेयर्स होते थे उसको हम कहाँ दिखाते थे? आप एएस में प्रेफरेंस शेयर्स को बैलेंस शीट में कहाँ प्रेजेंट करते थे? क्या कोई मुझे बता सकता है कि प्रेफरेंस शेयर्स को आप बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते थे? We are not getting any answers. I request someone, अगर कोई किसी को पता है प्रेफरेंस शेयर्स को पहले हम कहाँ दिखाया करते थे बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी, इक्विटी, एसेट साइड? ओके ओके, नेवर माइंड। सो प्रेफरेंस शेयर्स पहले लाइबिलिटी साइड आते थे, सॉरी इक्विटी साइड आते थे, इक्विटी में दिखाया करते थे, बट नाउ एज पर इंडेस आपको प्रेफरेंस शेयर्स में असेसमेंट करनी है और देखना है कि क्या वो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। अगर वो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसका मतलब कि उसमें कुछ लाइबिलिटी पोर्शन भी है, कुछ इक्विटी पोर्शन है, कुछ लाइबिलिटी पोर्शन है। तो लाइबिलिटी पोर्शन आपको लाइबिलिटी में ही दिखाना पड़ेगा, राइट, आप उसको इक्विटी में नहीं दिखा सकते। सो नाउ जो कि प्रेफरेंस शेयर्स आपके एएस में इक्विटी में आया करता था, अब वो लाइबिलिटी में भी आ रहा है। सो देयर इज एन एडिशन इन द लाइबिलिटी. So if you'll see, the financial instruments have brought major changes, and compound financial instruments जहां पे भी रहेंगे, for example preference shares, convertible debentures, convertible preference shares, so these all lead to an addition into the liabilities. What will happen due to this? Due to this, the financial ratios will change, debt equity ratio will change, interest coverage ratio will change, right? So this is one of the major change. Now another major change, fair value concept. IND-AS runs on the fair value concept. एक पूरा का पूरा IND-AS है, IND-AS 113 on fair value measurement, जो कि आपको बताता है कि जिस भी स्टैंडर्ड में आपको बोला जाए फेयर वैल्यू यूज करने के लिए, उसकी कंप्यूटेशन कैसे करनी है, उसको डिराइव कहां से करना है, एक्सेप्ट IND-AS 102 जो कि शेयर बेस्ड पेमेंट्स पे है। शेयर बेस्ड पेमेंट में जो फेयर वैल्यू यूज करनी है उसकी डेफिनेशन सेम स्टैंडर्ड में है, बट अदर देन दैट the fair value needs to be followed as per IND-AS 113. So इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो थोड़े वॉलेटाइल हो गए, बिकॉज फेयर वैल्यू तो चेंज होती रहती है। उसकी वजह से मैनेजमेंट को करंट मार्केट सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है, उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, चेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्या आ रहा है, बिकॉज दैट इज इम्पैक्टिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नाउ। यू नीड टू गिव अ वेरिएंस एनालिसिस की मूवमेंट क्यों आया है। अगर फेयर वैल्यू की वजह से मूवमेंट है तो फिर क्यों आया है वो मूवमेंट, राइट? अगर कोटेड है शेयर्स देन तो वी कैन अंडरस्टैंड, अनकोटेड है तो क्यों है, किस मेजर इनपुट में चेंज आया है, राइट? सो ऑल दीज changes, all these fair value, current market situation, all these factors management needs to monitor on a daily basis, on a regular basis. Now as we discussed already, extensive disclosures are required. ये हम सबको पता चल गया है, इंडेस के इतने मोटे मोटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। Also substance of transaction, substance over form, एएस में भी था, कोई नई बात नहीं है, लेकिन एएस में फॉलो होता था वो पता नहीं,
लेकिन IND-AS ने तो क्लियरली बोल दिया है सब्सटेंस ओवर फॉर्म होगा। जिस तरीके से स्टैंडर्ड्स बने हैं IND-AS, वो पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक्चुअली लीगल फॉर्म को देखा नहीं जा रहा है, यहाँ पे सब्सटेंस को देखा जा रहा है. So if you'll go by IND-AS 115 on revenues, IND-AS 116 on leases, financial instruments, business combination, definition of business combination, definition of control under IND-AS 110, all these standards go by the substance of a particular event or a transaction. There are a lot of judgment, a lot of assessment that is required to conclude on anything under IND-AS. Right? So, but this is also very logical. बिकॉज सिर्फ एक रूल के बेसिस पे आप कंक्लूड कर रहे हो, और एक है कि आप एक प्रिंसिपल दे दिया, अब उसके ऊपर आप असेसमेंट करो कि आपकी कंपनी में ये किस तरीके से बैठ रहा है, आपकी कंपनी का नेचर क्या है, आपके ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है, उसके हिसाब से आप कंक्लूड कर रहे हो. राइट? सो the financial reporting has become a lot more logical, a lot more practical. That is what I feel. Now, also we need to understand that IND-AS में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक हैं. AS में ऐसा कुछ नहीं था. फॉर एग्जाम्पल अमूल है, राइट, ITC है, डाबर है, इनके खेत होते हैं, इनका कैटल होता है, गाय बछड़े, ये सब, इनकी अकाउंटिंग कैसे होती है? AS में तो कहीं नहीं था. बट IND-AS में देयर इज अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, IND-AS 41 on agriculture, which talks about the valuation of your cows, the valuation of your trees, the valuation of your crops. So there is a specific standard on that. जैसे कि शेयर बेस्ड पेमेंट, अब वो गाइडेंस नोट रिवाइज हो गया है. पहले इनफैक्ट अभी भी AS में I-GAAP में कोई स्टैंडर्ड नहीं है ESOPs के ऊपर, गाइडेंस नोट है इंस्टीट्यूट का. बट इन IND-AS there is a specific standard, IND-AS 102. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इन पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, I-GAAP में कोई स्टैंडर्ड नहीं है. बट इन IND-AS, as I told you, there are 3 specific standards on financial instruments. Then hyperinflationary economies, there is a specific standard on this. Insurance contracts, regulatory deferral accounts, service concession arrangements, जो कि पब्लिक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, टोल रोड्स हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स की अकाउंटिंग कैसे करनी है, ये I-GAAP में नहीं था, बट दिस इज देयर इन दी IND-AS. IND-AS 115 का अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स D, सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट, राइट. कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल, जो कि आलोक सर ने भी बताया, देयर इज अ कार्विन, राइट, ये अपेंडिक्स हमने ऐड करा है IND-AS 103 में. सो these are some additional guidance that has been provided under IND-AS. IND-AS regime has become very inclusive, I think, जो कि I-GAAP में नहीं था. I think that's all on an Uber level. बहुत कुछ है, डीप डाइव करने लगेंगे हम IND-AS में तो पता नहीं कितना टाइम चला जाएगा. It is very difficult to cover the context, the entire feel of IND-AS in 1.5 hours, but I think Alok sir and Nisha ji has done a justice to it. उन्होंने बहुत कुछ समझा के बैकग्राउंड दे दिया है, and I've tried to give an insight कि IND-AS आने से हुआ क्या है, the intensity of it that we all need to feel, right? Because AS भी very soon they will be aligned with IND-AS, तो हम सबको समझना बहुत जरूरी है. So I think that's all from my side, and Sumit sir. Thank you so much, Nisha ji, and thank you so much, Chandni ji, for such a nice deliberation on IND-AS topic. Chandni ji already left, or is she there? I think she already left. She might be in hurry. So, Nisha ji, there are some queries. Would you like to take up those queries? Nisha ji, am I audible to you? Or let me read out the queries and answer. Yeah. First question is, I can read. IND-AS is still not applicable on corporate having. I think this has already been covered. Yes, IND-AS is not applicable if your net worth is less than 250 crore unless and until you are a subsidiary
joint venture or associate of any company on which IND-AS is applicable. Here we have again Chandni with us. I think you left by mistake, is it? Yeah, actually. Let's No, it's find out. so Chandni, we were I just was taking up the queries. stopping my screen share, but then I clicked on leave studio. So yeah. Okay, it's fine. I am reading out, taking up the questions, and I'll pass it on to you if there is something which was covered by you, right? Yeah, definitely. Ma'am, please speak again about three balance sheets. I think this has been dealt by Chandni. Yeah, so I'll take up this one. Please tell about the treatment of preference share dividend in India. So basically, preference share dividend is nothing but a part of, since preference share, you are classifying it as liability. Right now, dividend will become your interest cost, your finance cost. क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर जिसको आप लाइबिलिटी की तरह क्लासिफाई कर रहे हो वो आपकी एक ऑब्लिगेशन, एक अनकंडीशनल ऑब्लिगेशन टू पे, जो आप पे कर रहे हो, जो ये अनकंडीशनल लाइबिलिटी है वो आपके लाइबिलिटी पार्ट में आएगी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी में, उस पर जो भी कॉस्ट इनकर हो रही है दैट इज योर फाइनेंस कॉस्ट. सो आप डिविडेंड पे आउट कर रहे हो, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर स्टेटमेंट ऑफ P&L एज फाइनेंस कॉस्ट. बट वो भी एक अलग मेथड है, कैलकुलेशन लगेगा, EIR मेथड से कैलकुलेशन होता है. इट इज नॉट कि जो आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है वो आपके P&L में दिखेगा, नॉट लाइक दैट. देयर इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द फाइनेंस कॉस्ट ऑन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, so that we need to follow. For that you'll need to read in IND-AS 32 and IND-AS 109. So we have one question, and the question is, if IND-AS is indirectly applicable on subsidiary because of listed NBFC, then are IND-AS applicable on other subsidiaries of that subsidiary? Okay, yes, Anshul Maheshwari ji, yes, to my view, it is applicable on further subsidiaries as well, because the second subsidiary or the company you are asking will also be preparing its console financial. So yes, it will be applicable on the step down subsidiary as well. Then thanks for the good feedback. When Naresh is asking, not clear when all the figures are required to be restated for the previous years, then why do we have third financial statement? Don't you think these will include all those adjustments also if there is no change in prior period FSC? When there is something, generally we make all these, the standard require us to make all these adjustments in either, if it relate to the comparative period, we restate it. If it relate to period prior to comparative period, then we do all the adjustments in the opening period, which we say is, suppose in our example, April 1, 2018. But the standard says, like, if there are major changes, then you are supposed to give, if there are a lot of changes in, then you are supposed to give a third balance sheet, but that is in very rare cases. So we discussed that generally all those adjustments are done on the April 1, 2018, and a note is given that why, what all the adjustments are done. But if you are preparing the IND-AS financial statement for the very first time, then you are supposed to give three balance sheets, because we understand that there are lot of changes, so the standard requires us to give a third balance sheet. Otherwise you are required to adjust the balances on April 1, 2018 in our example, and you have to give a detailed note on it. Then SOKI and OCI is required to be prepared for last year also. Yes, as we discussed that now SOKI is a part of your financial statement, is one of the component. So yes, we have to prepare it like we prepare for current year and we give comparative figures. So yes, we have to prepare it. Naresh is asking, could you share any FSN report with notes prepared under IND-AS? Naresh, you can download any of the annual reports of any listed company, because all listed companies do prepare as per IND-AS. So these are easily available on net. Preference share part is already discussed by Chandani.
Shelly is asking, what is compound financial instruments? So Shelly, sometime, we have certain instrument which have both the characteristic of some liability portion, some equity portion. Like example you can take is like if we have some debentures with the option to convert, जिसमें होता है ना optionally convertible debentures, इस तरीके के आपके पास कुछ ऑप्शन है, तो आप देखोगे अगर अब इसकी दो पॉसिबिलिटी है, अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेगा तो उसको इक्विटी मिलेगा, तो हमें लगता है कि इसमें तो इक्विटी का नेचर है। बट अगर वो डिवेंचर होल्डर ऑप्शन नहीं एक्सरसाइज करेगा तो उसको डिवेंचर जो है, जो कंपनी है उसको डिवेंचर के लिए कंपनी के लिए डिवेंचर इज एज गुड एज लोन, और उसको रिडीम करना होगा, उसको पैसा वापस करना होगा। तो आप देखोगे इस तरीके के दोनों नेचर आ रहे हैं, कुछ इक्विटी भी आ रहा है, कुछ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में मिक्स नेचर है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड निशा जी, आई थिंक थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, बताते हैं कि लैग आ रहा है। लाइबिलिटी, I think Yeah, she's it's fine back now. now. Yeah, it's Over to fine you, now. Priyanka. Yeah, it's fine now. So I think all the queries have been taken up by today's learned faculties. And thank you so much, Ms. Chandani, and thank you so much, Ms. Nisha ji, for this knowledgeable webinar. I hope viewers have enjoyed it and learned so much about the conversion from Indian GAAP to IND-AS. As Chandni ji rightly said that it is not possible to cover all the aspect of IND-AS in just 1.5 hours of the webinar, but we will be covering many topics related to IND-AS in this series of kickoff webinar. And I would like to thank you once again to all the viewers and to the speakers of today's webinar. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you Thank so you, much. Chandni. Thank you, Nisha ji. Thank you so much. It was a pleasure, delight to share the platform with you. Same here. I think Thank people you. are already asking for the next session. So Yeah. yeah, we Yeah, will we as are soon as excited. we Actually, can. yeah, viewers are very thankful to today's webinar and all the presentations you have presented during this session, and they are more excited for next topic now. I think next session, these are fortnightly sessions. So Yes. next is going to be on 19th of Next December, but the topic is yet to be Saturday after communicated. 50 minutes. Yeah, it will be on 19th. I think you can also share the link of WhatsApp group that we have created so that it's easier for everyone to I'll tell stay Sumit sir connected. to share it with everyone because I don't have the access of it. Then I'll Yeah, tell Sumit sir to share it in the next session. So definitely. I think we should end this session now. Yeah, Yeah. yeah. Thank Okay, you. thank you Thank you so so much. much. Thanks. Bye. Bye.